Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about some very important English sentence structures using is, am and are. These are called be verbs and they help us make simple but powerful sentences in English. Okay friends, let me show you something. I am a student. I am a doctor. I am happy. I am teaching. I am a good boy. I am here. एठारे मु गोटे ऑब्दुलारी वर्ब नेछि बी वर्ब नेछि am. ओके आमे is am एवं are को यूज करी आमे सेंटेंसेस बनाई सिखिबा. वर्तमान मु केवल am को नेछि. I am a student. I am a doctor. I am happy. I am teaching. I am a good boy. I am here. I am a student. Student होछि गोटे noun. I am a doctor. Doctor होछि मध्य गोटे noun. I am happy. Happy word टी होछि adjective. I am teaching. Teaching word टी होछि गोटे gerund. Teaching word टी होछि gerund. एवं आमे ताको कहि परिबा continue form of the verb. Continue form of the verb. I am a good boy. Good होछि गोटे adjective plus noun. Boy होछि गोटे noun. एठार दुईटी कॉम्बिनेशन अछि adjective plus noun रो. Good होछि adjective एवं boy होछि noun. Good boy adjective plus noun. Good boy भला पिला. I am here मु एठारे अछि. Adverb मु एठारे आपण मानकु समस्त को कहिबा को चाहे कि सब्जेक्ट प्लस इज am are सब्जेक्ट प्लस इज am are noun सब्जेक्ट प्लस इज am are adjective सब्जेक्ट प्लस इज am are gerund सब्जेक्ट प्लस इज am are adjective प्लस noun एवं सब्जेक्ट प्लस इज am are adverb. आज रो वीडियो रे आमे इज am एवं are रो व्यवहार सिखिबा. Is, am and are used to describe people, things, actions and conditions. We use them with nouns, adjectives, gerunds, adjective plus nouns combinations and adverbs. You can see the structure here. I have written over the whiteboard subject plus is, am, are plus noun. Okay, this structure tells us what and who the subject is. For example, he is a doctor, I am a teacher, I am a student, I am a boy, I am an engineer, etc. Subject is a doctor. Subject plus is plus a noun. गोटे noun. Subject आसिला हमर be verb is आसिला एवं हमर noun आसिला doctor. ओके हमर सब्जेक्ट रे आमे नै परिबा सब्जेक्ट आमे नै परिबा यू पाई आमे केउ बी वर्ब यूज करि थाउ आर. यू आर ए डॉक्टर. यू आर ए डॉक्टर. यू आर ए टीचर. यू आर एन इंजीनियर. यू आर ए बिजनेसमैन. सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब ए नाउन subject plus is am are plus noun. They are students, they are boys, they are girls. Subject अनुसारे हमर is am are व्यवहार होई थाए तापरे हमर गोटे noun रही थाए. टास्क रहिला कि तुमे माने एमिति बहुत गुडे सेंटेंस बनाओ एवं अभ्यास करो. केमति नबो ना subject plus is am are plus नाउन ने कि सेंटेंस बनाओ आउ तमे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट नेबो सेही अनुसार तमे इज एम आर व्यवहार करि पारिबो. जेमिति कि यू नो ही पाखरे सी पाखरे इज लागे. यू पाई आर रो व्यवहार होई थाए. दे पाई आर रो व्यवहार होई थाए एवं आई पाई आम रो व्यवहार होई थाए. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एवं प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब.